Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the viewers and exam aspirants. Now we will discuss about the hydrops history and to rule out the risk factor and the causes and differentials. As we have previously discussed about the how to take a history of congenital anomalies from a pregnant woman. So this history is just a subpart of that history. Since the hydrops is common and important, so I have made it another separate template. So let's begin with it. Initially, always inquire about the biodata. In the biodata, most significant points are consanguineous marriage, maternal age, and most important, which I have highlighted, is the blood group of the patient. If it is negative, inquire about the husband's blood group. Then afterwards, the patient can come to you with a complaint of either an anomalous baby on the scan report, admitted for the termination of pregnancy due to hydrops fetalis and causing incompatible with life, either intrauterine death and aberrant glycal associated with it, for instance, polyhydramnios and decreased fetal movement. In the history of presenting illness, you should inquire about when the hydrops was diagnosed, either on the first scan, which is a dating scan or an anomaly scan, or then any subsequent growth scans. How it was diagnosed by a scan report, any other event associated with it, and what have you done for this up till now, and investigations done so far, which includes the fetal echocardiography, maternal blood group, if not known, referral to the fetal medicine unit, and the treatment taken for it or not. So in the first trimester, inquire about the dating scan and the twins. As the twin transfusion syndrome is one of the most important cause of non-immune hydrops, then inquire about the fever, flu, rash, pets at home, most specifically cats, to rule out torch. Along with the torch infection, the other fetal infections which causes hydrops are syphilis, parvovirus B19, and varicella zoster virus. Then inquire about the history of the PV breeding, and if the maternal blood group is Rh negative and husband's being positive, you should think about the fetal maternal hemorrhage, which is a very important cause of hydrops. In the second trimester, inquire about the anomaly scan done, its finding, any twins or twin transfusion syndrome, any diaphragmatic hernia, or any endochorangioma or any other malformation which are associated with the hydrops, for instance, thoracic malformations, any extrapulmonary sequestrations, hydrochylothorax, any skeletal dysplasia. Then, if there is any cardiac anomaly on the anomalous scan or any significant maternal history of cardiac disease which is congenital, ask about the fetal echo done or not and its finding and the cardiac abnormalities if present. Then inquire about any invasive testing done to rule out the cause of the hydrops, for instance, CVS, amniocentesis, or cell-free fetal DNA. In the third trimester, inquire about the subsequent growth scans and Dopplers and its finding, whether the fetal movements are satisfactory to mother or not, and again inquire about the antepartum hemorrhage and history of abdominal trauma, fall, to rule out the fetal maternal hemorrhage. In the obstetrical history, inquire about the previous congenital anomalies and intrauterine death and the NTD given in the previous pregnancy if the mother is Rh negative and the baby's blood group being positive, because this is one of the very important questions related to the leading cause of hydrops, immune hydrops. In the past history, inquire about the diabetes and cardiac disease of the mother, and heart blocks of mother, and renal disease. In the blood transfusion history, inquire about the thalassemia and repeated multiple blood transfusions. In family history, congenital anomalies, inquire about the cardiac diseases or metabolic disorders. For the metabolic disorders, you can simply ask any family history significant to the food and nutrition and digestion problems. So this is how you can inquire about the family history, and the personal history, inquire about the substance and alcohol misuse. These are the causes of hydrops, which are immune hydrops, most importantly caused by Rh incompatibility. Then comes the non-immune causes, which includes the infections, which are
Besides torch, which are syphilis, parvovirus B19, even HIV. So the serious abnormalities include tachyarrhythmia of fetus, fetal dysarrhythmias, fetal heart block, fetal congenital cardiac abnormalities. Chromosomal abnormalities include trisomy 21 and Turner syndrome, twin transfusion syndrome, alpha thalassemia of the fetus. In the gender urinary abnormalities, there are urinary tract abnormalities, the structure abnormalities, the tumors, and then comes the gastrointestinal abnormalities, the duodenal atresia, meconium peritonitis, diaphragmatic hernia, cholangioma, fetal tumors, for instance, sacrococcygeal teratomas and other thoracic tumors, and glycogen storage disorders, which are the inborn errors of metabolism. So these are the causes of the hydrops, and you need to rule out. Mostly you will rule out with the help of the history and the anomaly scan. So let's repeat it in the Urdu language. In the hydrops history, इसको लेमैन में आप कैसे कहेंगे कि बच्चे के पेट में या बच्चे के बाकी के जिस्म के अंदर पानी पड़ जाता है, सोजन हो जाती है, या बच्चे के गिर पानी ज्यादा हो जाता है, विच इज पॉलीहाइड्रोमिनोस। उसमें आपने पूछना क्या कि खानदान में शादी हुई थी, आपकी उम्र कितनी, मिटरनल एज इज सिग्निफिकेंट, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर नेगेटिव है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी पूछना है। प्रेजेंटिंग ऑफ क्लिनिकल पेशेंट आपके पास आएगी कि वो जो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बच्चा नॉर्मल बताया है, बच्चे ने कहा है कि आपके बच्चे के पेट में या सर में या जिस्म के किसी और हिस्से में पानी पड़ गया है, बच्चा जब पैदा होगा तो बच नहीं सकता, तो उसे हमें कराना पड़ेगा। बच्चे के पेट में बहुत वफात हो चुकी है, और जब स्कैन करवाया तो बच्चा नॉर्मल था। जब बच्चे के गिर पानी कम है या ज्यादा है पानी, हाइड्रोप्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमिनोस और डिक्रीज फीटल मूवमेंट के साथ। सो तो आपने भी हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या पूछ रहे हैं, कैसे डायग्नोस हुआ था, कब डायग्नोस हुआ था, किस महीने में डायग्नोस हुआ था, और अब तक के लिए क्या किया है, क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या टेस्ट करवाए हैं, क्या आपने फीटल बच्चे के माहिरीन डॉक्टर को चेक करवाया था, फीटल मेडिसिन यूनिट को चेक करवाया था, या कोई इलाज वगैरह करवाया है अब तक इसका कि नहीं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अल्ट्रासाउंड पे बच्चा आपके डॉक्टर ने कहीं जुमा बच्चे तो नहीं बताए थे। हमल के शुरू में आपको नजला जुकाम, बुखार, रेशा जिस्म पे धब्बे बन जाते हैं, रैश पे जाते हैं, या फिर घरों की पालतू बिल्लियां हो, और कोई इन्फेक्शन हो गई हो आपको शुरू में, हमल के शुरू के 3 महीने में खून करता हो। फिर सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे का पैदाइशी निकाय चेक करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसके ऊपर कोई मसला तो नहीं था बच्चे की खून की सप्लाई में, या बच्चे के फेफड़े ठीक बने हुए थे। उसके बाद बच्चे का दिल का अल्ट्रासाउंड करवाया था आपने, क्या आपने बच्चे का कोई सुई वाला टेस्ट करवाया है, बच्चे के अव्वल का टुकड़ा लेकर, या बच्चे के गिर पानी का टुकड़ा सैंपल लेकर, या फिर आप अपना खून का सैंपल जिसमें बच्चे की खुलियात होती हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपने बच्चे के कोई अल्ट्रासाउंड या गंभीर अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें क्या था, बच्चे की हरकत ठीक महसूस होती है, कोई खून पड़ा हो आपको, या गिर गई हो, चोट लग गई हो, तो जरूरत पड़ी तो विटामिन हाइब्रिड्स। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में एंटीडी का पूछना है आपने कि पिछले बच्चे की दफा अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चे का पॉजिटिव था, तो क्या आपको पहले भी महंगा टीका लगा था, पहले बच्चे की दफा कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ था, या पहले कोई बच्चा फौत हो गया हो। पास्ट हिस्ट्री में इंक्वायर अबाउट शुगर का मसला, दिल का मसला, या गुर्दों का मसला तो नहीं है, कि आपको खून का मसला तो नहीं, या कुछ खून लगता हो। फैमिली हिस्ट्री में हमें पूछना है कि आपके खानदान में मूसी बीमारी, कोई दिल की बीमारी, या फिर कोई ऐसी बीमारी खाने खुराक से रिलेटेड आपको कोई मसला हो खानदान में, जिसमें खुराक सही हजम ना होती हो, और जिगर और तिल्ली भर जाती हो, और आप शराब नोशी या कोई और नशा वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करती हो। So these are the causes of the hydrops which I have already discussed. Do subscribe the channel and join the Telegram group for more updates and history template. Thank you and good luck.